हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 9 के अंदर केमिस्ट्री जो सेक्शन है उसके अंदर की इम्पोर्टेंट लैब एक्टिविटी है चैप्टर नंबर 2 से हाउ कैन वी प्रिपेयर सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। आई होप यू विल बी एंजॉय। किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलॉइड बना सकते हैं या फिर उनको कुछ पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक फिल्ट्रेबिलिटी कि फ़िल्टर हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, स्टेबिलिटी स्टेबल होते हैं या नहीं होते हैं, और थर्ड है ट्रांसपेरेंसी कि वो कैसे दिखाई देते हैं। तो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हम लोग तीनों सॉल्यूशन सबसे पहले बनाएंगे। उसके लिए हम लोग टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद सबसे पहले हम लोग एक सॉल्ट लेंगे। यहाँ पर हम लोग अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं। उसका एक स्पून लेकर के हम लोग इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसमें हम लोग वाटर मिक्स करेंगे। वाटर मिक्स करने के बाद उसको अच्छी तरीके से आप शेक कर लीजिए। शेक करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। तो पहले जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर हम लोगों ने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया है। फिर दूसरी तरफ हम लोग जो टेस्ट ट्यूब लेंगे उसके अंदर हम लोग लेंगे स्टार्च पाउडर। स्टार्च पाउडर जो स्टार्च पोटैटोज़ में, राइस में मिलता है, वो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। जिस तरीके से फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वाटर मिलाया था उसी तरीके से सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हम लोग वाटर मिक्स करेंगे और फिर इसको अच्छे से शेक करेंगे। और शेक करने के बाद इसको भी थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तीसरी जो लास्ट टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम लोग चॉक का इस्तेमाल करते हैं, चॉक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चॉक पाउडर हम लोग बना सकते हैं लैब में। उसको चॉक को क्रश करने के बाद में उस चॉक पाउडर को आपको पानी के अंदर मिक्स कर देना है। थर्ड टेस्ट ट्यूब ये हमने लिया है और इसके अंदर हम लोग चॉक पाउडर ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद सेम प्रोसेस, जिस तरीके से उन दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने सेक करके रखा था उसी तरीके से इसको भी अच्छी तरीके से शेक करेंगे। आफ्टर सेकिंग, नाउ अगेन पुट दिस टेस्ट ट्यूब इन test tube stand. So in this manner we have completed the preparation of solution, suspension and colloids. Now this is the first test tube in which we add water plus salt. This is the second test tube in which we have added water and starch, and the last one in which we have added chalk powder and water, because we have put them for some time. So in these two test tubes, especially for starch and chalk powder, some particles of starch and chalk powder has been settled down at the bottom. Okay, so again I will disturb it so that we can clearly understand the meaning of solution, colloid and suspension. The first test tube, it is the example or formation of solution, means in which we cannot see the solute as well as the solvent particles, and there is no settlement or there is no settling of the solute particle at the bottom. So it means the solution is stable, and second thing is that it is transparent. The second test tube in which we have added starch powder, again this is not transparent, and initially there is no settling of the starch particle at the bottom. But this is not transparent and we are not able to again see the particle of solute as well as solvent. But in the case of chalk powder and water, as soon as we mix both of them, suddenly, immediately, there is a settling of chalk particle at the bottom of this test tube. This is the example of suspension. This is the example of colloid. So colloids are more stable than suspension, because in suspension the solid particle immediately settle down at the bottom,
Okay, and this is not also clear, it is not transparent, it is also not transparent. So the first two factor we have completed, the transparency and the stability of solution, suspension and colloid. Now the third parameter which we have to use here to differentiate between solution, colloid and suspension, that is filterability. Means तीनों को हमको filter करना है. For that we'll take a conical flask, then a funnel, and for the filtration we use a special paper which is known as filter paper. So to use this filter paper, now fold like this, okay, and in this manner, so that we can filter the given substances. Adjust filter paper like this. This is a little bit more in size. Before filtration, now wet the filter paper with water so that the filtration process can be smoothly proceed. After making this arrangement, now filter the solution of or the mixture of first test tube, which is solution. This is homogeneous mixture also. So now we can directly filter it, and the correct way to filter any liquid, we should use a glass rod, okay, so that there should be no loss of that solute or particular solute or solvent. This is the glass rod. When you are going to filter any mixture, use this technique like that. So we are using here, and after filtration, what we will observe, wait for the minute. So this first mixture we have settled for the filtration process. In the same way, we have to filter the second mixture which we have kept in the second test tube, which was starch and water. Again, make the necessary arrangement for the filtration. Use funnel, filter paper, fold like this, again one more folding like this, and just introduce or keep inside the funnel. Again, use the water for the smooth processing of filtration, and use the second test tube in which we have added starch and water. Okay. This one, again shake it, okay, and proceed for the filtration. Now in the same way, we have to proceed the third mixture also, which was suspension. Same arrangement. Use filter paper, funnel, water, like the previous step. Use water there. Adjust and use the third solution and filter it. Okay, the filtration process in the first test tube we have completed. We have obtained a clear liquid. This liquid is known as filtrate, and if you observe the filter paper of the first setup, there is nothing on the filter paper. It means we cannot separate solute from the homogeneous mixture, which is known as solution. So simply we can say we cannot separate the component of a solution. Now the second setup is also completed. This was starch and water. You can again observe that there is a clear liquid there, and there is a little bit portion of starch particles. So sometimes we can separate the solute particles of colloid, but not always. And in the third setup, okay,
if you observe a clear liquid which is filtrate and more solute particle inside the filter paper, on the surface of filter paper, solid particles, all the chalk particles will be there, and that is known as residue. So dear friends, in this manner we can understand the formation concept of solution, colloid, suspension, their transparency, their stability and their filtration. Can we separate the component of all these three categories of mixtures through filtration process. I hope you have enjoyed this video. Thank you so much.